Okay, students, welcome to the third session of our week 12. Basically, week 12 is about overall organizing concept. We were on overall the differences between staff and line authority concept. This is what we have discussed in the last session. This is what the difference. Span of control kya hota hai ji? Now, this is the concept that we have to discuss right now. The span of control definition refers to the amount of employees directly reporting to the manager or superior. So span of control की जब हम बात करते हैं तो it directly refers to the amount of employees directly reporting to a manager or superior. कि generally आप एक मैनेजर को या एक सुपीरियर को कैसे आप रिपोर्ट करते हैं, या जनरली हाउ मेनी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर वर्किंग अंडर ईच मैनेजर. एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कितने लोग जो है वो एक इंडिविजुअल के अंडर काम कर रहे हैं. लाइक बीइंग अ मैनेजर, अगर मैं 30 बंदों को देख रही हूँ तो मेरा स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है, 30. लेकिन अगर उन 30 लोगों में से 2-3 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो आगे 4-4 लोगों को देख रहे हैं, तो वो मेरा स्पैन ऑफ कंट्रोल नहीं है, वो उनका स्पैन ऑफ कंट्रोल है, राइट? So span of control is one of the you can say cornerstones of the management theory. It's important because of the large degree determined number of level of manager in the organization. Another very important thing कि number of levels कितने हैं एक organization के, और हर level के अंदर कितने लोग हैं, ये भी span of control of the organization आता है. जनरली अगर इसमें देखें तो इस organization में टोटल 4 लोग हैं, तो organization का span of control 4 है, right? All other things being equal, the wider the larger span of, the more efficient an organization is. वो कह रहा है कि जितना भी ब्रॉडर होता है स्पैन ऑफ कंट्रोल, उतनी एफिशिएंटली पीपल कैन वर्क. ज्यादा लोग होते हैं, अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं. इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं डेफिनेटली, but generally we can go for it. So what is the span of control? When we are talking about the definition, it refers to the number of subordinates under the manager's direct control. It's an example: a manager with 5 direct report has a span of control of 5. Too many or few direct report is a good way to view how efficient an organization is, and as long as it looked at in the context of company organizational structure. So too many or few direct reporting individual is good, because बहुत ज्यादा हो तो आपका जो डायरेक्ट डिसीजन है वो इम्प्लीमेंट करने में मुश्किल होती है, और वो हम कह कुछ और रहे होते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे जब नंबर ऑफ लेवल से पास आउट होता है तो वो उसका बेसिक पर्पस कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है. सो जनरली स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है? हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग अंडर ईच मैनेजर, दैट इज द स्पैन ऑफ कंट्रोल. जस्ट लाइक इन दिस एग्जांपल, देयर नंबर ऑफ पर्संस दोज आर वर्किंग अंडर दैट स्पेसिफिक इंडिविजुअल आर सीईओ. तो ये इस पूरा स्पैन ऑफ कंट्रोल इस ऑर्गेनाइजेशन का 34 है. ये सब इसके अंडर आते हैं. ये देखें, ये इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसलिए इसके अंडर आते हैं. अगर ये वाले डायरेक्ट सिर्फ होते और बाकी इनके अंडर होते तो इसका स्पैन ऑफ कंट्रोल यही 2-4 लोग जो सीईओ के अंडर है वो आता. ठीक है. सो इज देयर एनी ऑप्टिमल नंबर? नो, डेफिनेटली. Generally, just like in a call center, span of control can be number over 100. Generally, span of control बहुत ज्यादा होता है. Nature of work, because same nature of work होता है, तो they can go for it. आपका span of control ज्यादा होता है. Expanding on the concept of span of control, it's broadened your understanding to see it in the context of the organizational structure, level of hierarchy. So what's the concept of width and height? Width क्या है? Organizational structure can be described as wide or narrow. So generally organization structure जो है वो या wide होता है या narrow होता है. What's the concept and why it is? हाइट में अगर देखें, टॉल की बात करें तो जनरली हायरार्की की फॉर्म में और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की फॉर्म में होता है. और जैसे जैसे हम फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन में देखें 1 2 3 एंड सो ऑन, तो वहां पे आपका ब्रॉडर होता जाता है. और नैरो में अगर जाएं, टॉप और मिडिल में जाएं, दैट मींस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में जाएं, तो आपका कंपैरेटिवली जो है वो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ज्यादा होता है. एंड व्हाट्स द डिफरेंस? फ्लैट में क्या फायदा नुकसान है और टॉल में क्या है? Generally, tall may you have narrow span of control, you have broader span of control when you are going for flat organization structure. ये देखें, इसमें broader है. While there are different pros and cons of the flat and tall organization structure, it must be designed to suit the business as well. मार्केटिंग नेचर का जो होता है उसमें यू नीड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, और वो फ्लैट में जाता है और बहुत ज्यादा लोग होते हैं. जनरली जो आपकी वर्क फोर्स जस्ट लाइक जैसे फोर्सेज में भी है, तो वो आपका कैप्टन है, लेफ्टिनेंट है, कैप्टन है, मेजर है, मेजर जनरल, वो क्या है, लेफ्टिनेंट कर्नल है, कर्नल है, मेजर.
ब्रिगेडियर है, मेजर जनरल है, जनरल है. सो देयर नंबर ऑफ, इसी तरह बाकी फोर्सेस में देयर नंबर ऑफ पोस्ट कमांडिंग अथॉरिटीज होती हैं इन द फॉर्म ऑफ different levels of management. What are the positive and negative point? Encourage the delegation of authority ज़्यादा होती है फ्लैट में, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा इन्फोर्स की जाती है कि आप मैनेज करें और काम करें. मैनेजर मस्ट बेटर डेलीगेट टू हैंडल लार्ज नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट, right? So you have to delegate it to the large number of subordinate and grant opportunities for subordinate to take on responsibility. कि generally आप कैसे responsibility लेते हैं and all that. It improves the communication speed and quality. It improves the quality of the communication and speed as well. It reduces the cost, more cost effective because of fewer levels, thus requiring fewer managers. So it helps prevent the workforce from disengaging by focusing on empowerment, autonomy, and self-direction. So generally, it will help or it will improve the overall workforce to engage for focusing on empowerment, autonomy, and self-direction पे ज़्यादा आप focus करते हैं. High managerial workload comes with a high span of control generally. Role confusion comparatively कम होती है. It cultivates the distrust of the management generally. अच्छा जी, tall versus flat organization structure. By the way, ये सारा पिछले वाला हमने पिछली उसमें डिस्कस कर लिया था. So we have to go for the tall organizational structure, positive and negative point. More rapid communication between small teams. आपकी comparatively rapid communication होती है small teams में. Groups are smaller and easier to control and manage. There is a great degree of specialization in division of labor. That means specialized work चाहिए होता है जब आप टॉलर की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट की तरफ. मोर एंड बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन, क्योंकि देखें यहाँ पे इसके कंपैरेटिवली एक ही लेवल है, यहाँ पे देयर नंबर ऑफ लेवल्स, so you can go for the more promotional opportunities for the employees as well. So communication can take too long, hampering the decisions. Generally, what are the negative points? Generally, it will take too much time and it's very long, then it will hamper the decision, and silence may develop the and prevent the cross-functional problem भी आपकी increase हो जाती है, and employees may feel lost and powerless. Sometimes जब आपकी बहुत ज़्यादा you can say levels of management होते हैं, तो you just feel you can say you don't have any power. So that is another problem. Now next one is about span of control. Contrasting के point of view से दिया हुआ assumptions दी हुई हैं कि what will be the assumptions of generally जब हम बात करते हैं span of control की, so that is about what we can say members at each level. Like आप इस तरह भी जा सकते हैं, not necessary कि आप multiply करें 4, 16, 64. Generally भी आप 4 से 6 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, हर लेवल पे डिपेंड करता है. But this is how you can go for it. और जो scope of management है वो इसके opposite होता है, वो ऐसे होता है. scope of management की अगर हम बात करें, उसमें scope of management क्या होता है जी? scope होता है कि जैसे जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन की टॉप लेवल मैनेजमेंट की तरफ जाएं तो उनका स्कोप होता है, बाउंड्रीज, लिमिटेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाती हैं. लेकिन स्पैन ऑफ कंट्रोल यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 16 है, तो दैट मीन्स स्पैन ऑफ कंट्रोल नीचे लेवल पे, लोअर लेवल मैनेजमेंट पे बढ़ता जाता है. स्पैन ऑफ कंट्रोल है लोग, स्कोप है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, योर बाउंड्रीज. तो बाउंड्रीज टॉप की ज्यादा होती है, मिडल की कम होती है, लोअर की और ज्यादा होती है, अपने काम से काम रखना. तो इसलिए ये स्कोप ऑफ मैनेजमेंट उल्टा होता है, इसकी पिरामिड ऑपोजिट होती है, और स्पैन ऑफ कंट्रोल की बेसिकली ये पिरामिड होती है. आई होप सो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. स्पैन होता है कि कितने लोग मेरे अंडर काम कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आपके लोअर लेवल मैनेजमेंट पे ज्यादा लोग होते हैं कंपैरेटिव टू टॉप. बिकॉज स्पैन ऑफ कंट्रोल की अगर हम बात करें तो जैसे पीएचडी में आप जाते हैं तो ज्यादा लोग कम लोग होते हैं, लेकिन अगर बैचलर में या जर्नल देखिए मास्टर्स में तो उसमें कम होते हैं कंपैरेटिवली. इसीलिए इसी तरह आप में से बीसीएस जो कर रहे हैं उसमें से द नंबर ऑफ पर्सन्स जो एमएस में जाएंगे, वेरी फ्यू ऑफ देम, समटाइम्स यू कैन से 50 और 60% मैक्सिमम कह लें, सब नहीं जाते हैं. अभी बहुत ज्यादा है ट्रेंड, तो इसलिए पीपल आर गोइंग टुवर्ड इट. पहले बहुत कम था. इसी तरह पीएचडी में भी वेरी फ्यू ऑफ देम दे हैव टू, बिकॉज नेचर ऑफ वर्क जैसे जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट में जाते हैं कॉम्प्लेक्स हो जाता है. लोअर लेवल मैनेजमेंट पे रूटीन नेचर ऑफ वर्क होता है, इसलिए उसमें कम लोग होते हैं. अच्छा जी, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट है? सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, वन ऑफ द क्वेश्चन दैट नीड टू बी आंसर्ड व्हेन ऑर्गेनाइजेशन इज
ओके जनरली आप जब भी डिसीजंस लेते हैं टुवर्ड टॉप लेवल मैनेजमेंट हो तो आपके डिसीजन सेंट्रलाइज होते हैं, टुवर्ड लोअर लेवल मैनेजमेंट हो तो डिसेंट्रलाइज होते हैं. सेंट्रलाइजेशन इज द डिग्री टू विच डिसीजंस टेक प्लेस एट अपर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. If top managers make the key decisions with little input from below, then the organization is more centralized. अगर आपके टॉप मैनेजर डिसीजंस जो हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट की विद द इनपुट ऑफ द ओवरऑल की डिसीजंस विद द इनपुट फ्रॉम द बिलो, जनरली आप लोअर लेवल मैनेजमेंट से इनपुट लेके एंड जस्ट यू हैव टू गो फॉर द टेकिंग द डिसीजंस, तो वो आपके सेंट्रलाइज होते हैं. ऑन द अदर हैंड, द मोर दैट lower level employees provide input or actually make the decisions, the more decentralization there is. So जितने ज्यादा आपके जो है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट की तरफ आते हैं उतने ज्यादा वो डिसेंट्रलाइज होते जाते हैं. So keep in mind, centralization, decentralization is either a concept, is not an either a concept. It's a relative or not a absolute. So generally, it's never completely centralized or decentralized. Traditional system में generally people wants to go for the centralized system. ज्यादा काम top level management और उनके अंदर होता है. जो आपके डिसेंट्रलाइज की बात करें तो जैसे आपके वर्क फ्रॉम होम एंड ऑल दैट, फ्रीलांसिंग, ये डिसेंट्रलाइज में चला जाता है. बट जनरली अगर देखा जाए तो हिस्ट्री बताती है कि यूएस और कनाडा के अंदर मोस्टली नंबर ऑफ डिकेड्स, टर्न ओवर द पास्ट सेवरल डिकेड्स, एट least in US and Canadian organization, they have to go for decentralization because उनका जो overall trend था वो ये था कि the person who is closest to the problem, he can take the decision. There is no need of कि आप उसको enforce करें कि top level management ही दे, लोअर और मिडिल ले सकती है. इसलिए कनाडा और यूएस में ज्यादा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो उनका है. मोर सेंट्रलाइज कब होता है और डिसेंट्रलाइज की पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट क्या है? सेंट्रलाइज में स्टेबल होता है, लोअर लेवल मैनेजर्स आर नॉट सो कैपेबल, टॉप लेवल मैनेजमेंट अपने हाथ में रखती है चीजें, लोअर लेवल मैनेजमेंट डोंट वांट टू से, दे डोंट हैव द से, डिसीजंस आर रिलेटिवली माइनर होते हैं. And sometimes organization is facing a crisis or risk, company is large comparatively, and effective implementation of the company strategies. For that reason, then you have to go for centralization. Decentralization कब होता है? Environment is complex, uncertain होती है, lower level managers are capable and experienced and they can take the decisions. Environment जो complex uncertain हो जाती है sometimes decentralized हो तो ये भी होता है. ये एक पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट भी कह सकते हैं आप. लोअर लेवल मैनेजर वांट अ वॉइस इन डिसीजंस, they want the voice and they have the say to take the decisions. They are significant, and corporate culture is open to allow the manager to say in what they want to say. Companies geographically dispersed होती है. Effective implementation of the company strategies depend on the manager having involvement and flexibility to take the decisions. So that is about decentralization. जब हम lower level management की तरफ चले जाते हैं और they can take the decision. So this is all about this session. और ये वाला session मुझे दोबारा करना पड़ा. In fact, जब मैंने पहले किया तो recording नहीं हुई. So इसमें this is what we have discussed about chain of command, line authority, staff authority का concept हमने देखा. Very important concept. उनके डिफरेंसेस क्या है? स्टाफ आपकी जो है वो टूवर्ड लोअर लेवल मैनेजमेंट ये कह सकते हैं एडवाइजरी इन नेचर है और इसकी डायरेक्शन अपवर्ड होती है, जबकि जो लाइन है उसकी डाउनवर्ड होती है. दैट मीन्स आप डाउनवर्ड कंट्रोल कर रहे होते हैं, कमांडिंग होती है. और ये एडवाइस है तो एडवाइस टॉप लेवल मैनेजमेंट को एडवाइस कर सकता है, कमांड फिर भी लाइन मैनेजर के पास है, लाइन अथॉरिटी के पास है. ठीक है जी. सो दिस इज द डिफरेंस एंड मोस्टली इट्स थ्रू डॉटेड लाइन और स्ट्रेट लाइन. ये डॉटेड लाइन है इसका मतलब है ये वीक और है और ये स्टाफ अथॉरिटी है, और स्ट्रेट लाइन दैट मींस इट्स अबाउट लाइन अथॉरिटी, राइट? So this is weak and this is strong authority, and they can take the decision. It's supervisory in nature, this is advisory in nature and all that. Right, span of control की बात करें तो overall this is what the span of control, like जो amount of employees overall कितने लोग एक manager के अंदर काम करते हैं, और जनरली आपका ब्रॉडर स्पैन ऑफ कंट्रोल लोअर लेवल मैनेजमेंट में होता है, टॉप में कम होता है. एंड दिस इज द स्पैन ऑफ कंट्रोल कॉन्सेप्ट. स्कोप ऑफ मैनेजमेंट इसके ऑपोजिट होता है. फर्स्ट चैप्टर में भी जो हमने पढ़ा था जनरल भी इसका कॉन्सेप्ट है. So this is what, and then centralization toward top level management होती है और decentralization toward lower level management होती है. That means decentralized dispersed way of
ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है या मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन होता है. दिस वन इज अबाउट 12th chapter. I hope so everyone is clear about this session. Thank you so much for this session, class.